The topic we are going to discuss about is fundamental principles of organic chemistry. And the subtopic is isomerism. Isomerism is defined as two or more compounds having same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers, and this phenomena is called isomerism. So ऐसे compounds जिनका molecular formula तो same है, बट उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, दैट्स व्हाई की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. Methane, ethane and propane do not show isomerism. ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. This fact is supported by experiment that there are two compounds having different physical properties but same molecular formula. So butane के दो structural isomers हैं. One is straight chain and the second one is isobutane जिसमें हमारे पास side chain present होती है. क्योंकि इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डिफर होते हैं, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्टिविटी है वो सेम होगी. Next, about the number of isomers. Number of isomers increases with as number of carbon atoms increases. Pentane has 3 isomers. Butane के 2 isomers थे. When atoms increases to 30, isomers reaches to 4 billions. So butane में 4 carbon atoms थे तो उसके 2 isomers थे. Pentane में एक carbon atom increase हुआ 5 हो गए और जिसको isomers थे वो भी increase हो गए up to 3. Next, we have the types of isomerisms. It is of two types, structural isomerism and cis-trans isomerism. Let's see first about structural isomerism. The structural isomerism arises due to difference in the arrangement of atoms within a molecule. It is exhibited in 5 different ways. So, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N-pentane we have a straight chain. Next, we have another side chain that is isopentane, और सेम कार्बन पे अगर हम एक और साइड चेन अटैच कर देते हैं so it becomes neopentane. That structural isomerism is further divided into chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism and tautomerism. जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी that was of chain isomerism जिसमें हम चेन में स्ट्रेट चेन है उसको फिर हम ब्रांच कर देते हैं, उसमें फर्दर ब्रांचिंग ऐड करके उसको चेन आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं. Let's discuss a question: which class of compounds can't show position isomerism? And the following are the options: alkanes, alkynes, alkenes और alkynes. And the option is alkanes. Alkanes क्यों position isomerism show नहीं कर सकते? क्योंकि they have a single bond और पूरे molecule में single bond ही होती है. जबकि अल्काइंस में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. अल्कीन्स में वी हैव डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं. और अल्कोहल्स में वी हैव OH ग्रुप, उसको भी हम कभी पोजीशन 2 पे चेंज कर सकते हैं, 3 पे भी अटैच कर सकते हैं, 4 पे भी अटैच कर सकते हैं. जबकि अल्केन्स में हमारे पास ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है. So this was all about the isomerism. I hope you have understood it well and thank you so much.